But thank you all very much for joining us on this session on Niti Shakti, because it's vital that there are more women in policy-making roles at the grassroots level, at the upper echelons. Each of them has a very remarkable story as the anchors introduce them. I'm going to start with Pranjal Patil ji here, right here. She's an IAS officer, and what's remarkable is she's the country's first visually impaired IAS officer. She's currently the district magistrate for the Shadara region in New Delhi. A huge round of applause for her. She's here, by sheer grit and perseverance. She gave the UPSC exams twice, cleared it with a very good rank, and cleared it without any coaching at all. Pranjal, share your experience with us. What motivated you to take up civil services? And, how do you go about being a district magistrate? How did you go about being a sub-collector in your previous role at Thiruvananthapuram? Yeah, hi. Thank you so much for having me here. And I think all of us have some ideas in our childhood that what our interest areas are, and we may not know it very clearly. So I was always inclined towards something social, and history was also my favorite subject. So I always wanted to do something, and I really didn't know how to go about it. So only when I went to college, I got to know that there are something called civil services, and I felt that, oh, it's something little closer to what I want to do. And obviously, it's not like when I got to know, right away I started doing it, because some basic academic has to be pursued. So I did my college. Then for higher studies, I came to Delhi, to JNU to study. And only after my master's and MPhil, I could get that courage and conviction and time and enough understanding of the exam and the preparation. So I started preparing for it, and though it was not very easy journey, I think no journey is easy, no matter what background we come from. No journey is easy, but with enough with inner determination and external support, we all can do what we want. And I think all credit goes to my own determination and the support I received from family, friends, and teachers and everyone. Thank you. That's a very inspiring story. We also have two Sarpanches or Pradhans in our midst. Babita ji, who is a Sarpanch, a Kashmiri Pandit, a Sarpanch in Jammu and Kashmir, and Sanyogita Singh Chauhan ji, who is a Sarpanch at Atari village in Lucknow. Babita ji, आप बताइए सरपंच कैसे बने आप और क्या अनुभव रहा है आपका? सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार. माइक इधर थोड़ा. हाँ. मैं सरपंच पुलवामा से हूँ. तो कैसे बनी, ये तो बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम विस्थापित लोग हैं. रामचंद्र जी का 14 साल का वनवास खत्म हो गया, बट हमारा वनवास अभी खत्म नहीं हुआ. तो उस चुनौती का सामना शुरुआत हमने की, कश्मीरी पंडितों ने की. हम दोबारा से कश्मीर गए और इलेक्शन में उतरे, क्योंकि उस टाइम क्या था कि सभी पार्टियों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था. तो सबसे पहले सामना हमारा ही हुआ, क्योंकि खतरे में आगे हमने ही होना था. तो हमने सोचा कि हम लड़ेंगे इलेक्शन, तो हमने लड़ा, हम जीते. तो आज बहुत अच्छे चल रही है हमारी सरपंची. आपको धमकी मिलती है पुलवामे में? देखिए, धमकियाँ कश्मीर है तो धमकियाँ ना मिले तो वो तो हो ही नहीं सकता. घाटी है. अभी आपने सुना होगा, हमारे आर्मी ऑफिस कह रहे थे कि जब कश्मीर का आता है कि कश्मीर पोस्टिंग, ओ गार्ड हो जाता है ना. तो चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है. और जब नारी शक्ति है तो फिर हमारे सामने चुनौती तो कोई नहीं है. सही बात है. हाँ. Sanyogita ji, you're an MBA by training, and then you decided to become a sarpanch at Atari village. आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए. आपको इंटरेस्ट कैसे हुई पब्लिक पॉलिसी में, पॉलिटिक्स में? जी, नमस्कार सभी को.
हम यूपी से हैं और लखनऊ डिस्ट्रिक्ट मलिहाबाद तहसील लगती है, माल ब्लॉक, अटारी ग्राम पंचायत। मलिहाबाद मैंगो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट घोषित है और एमबीए करने के बाद एक 6 महीने ही जॉब कर पाए थे कि शादी हो गई, एक ब्रेक आ गया। और बचपन से ही मन था कुछ करने के लिए और ग्रामीण विकास में शुरू से ही रुचि थी। रूरल इंडिया में या हम लोगों का ननिहाल, ददिहाल सब गांव से जुड़ा था, तो गांव में काम करने की इच्छा बहुत थी। तो ससुराल में भी गांव से जुड़ाव था। शादी बिजनेस क्लास फैमिली में हुई, ज़मींदारों में हुई। हमारा गांव था तो हमें इच्छा हुई कि हमें सरपंच बनना है और सरपंच बन के गाँव की सेवा और आसपास के गांव में भी शिक्षा का भी एक जोत जलाना है, क्योंकि यूपी में लिटरेसी रेट बहुत कम है और पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर शहर की ओर भागते हैं। तो ऐसा लगा कि गांव की तरफ हम अगर काम करेंगे तो कुछ दे पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये एक अनटैप्ड एरिया है। और यूपी में काम करना जहाँ महिला प्रधान तो होती है पर काम प्रधान पति करते हैं। तो ये जो प्रधान पति का कल्चर है ये चेंज करना था। एक रिवोल्यूशन मन में था कि एक जुनून था कि कुछ करना है। तो ये चुनाव लड़े और चुनाव भारी संख्या में जीते। लोगों का समर्थन था और बहुत सारे वादे भी किए थे कि जो गांव में या आसपास के गांव में जो नहीं हुआ है वो करके दिखाएंगे। तो जब चुनाव जीतने के बाद एक बहुत बड़ी गांव में खुली बैठक का आयोजन किया, क्योंकि इससे पहले खुली बैठकें या महिला बैठक, वृद्ध बैठक या बाल बैठक ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि कैसे कार्य योजना बनती है, कैसी बैठकें होती हैं। तो ऐसा, वो भी महिला एक बैठक का आयोजन करे, क्योंकि पुरुष बैठक करते हैं और पुरुष ही पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि गांव में ऐसा कल्चर होता है, पर्दा होता है, तो महिलाएं जल्दी आगे नहीं आती हैं। और क्योंकि ठाकुरों के परिवार से हैं तो ठाकुरों में तो ज़्यादातर वो महिला का पीछे ही रहती हैं, घर के अंदर ही रहती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बदलना था, तो खुली बैठक करी, महिलाओं को ज़्यादातर करके बुलाया कि आप सब आइए, कि आपकी महिला प्रधान है और आपका प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं और आपसे पूछ के हम कार्य योजना बनाएंगे, जीपीडीपी बनाएंगे कि आप गांव में क्या चाहती हैं, कैसा माहौल चाहती हैं। तो महिलाओं से उनसे उनकी राय ली और उनके हिसाब से जो भी उन्होंने कहा कि पानी से संबंधित उनको जो चुनौतियां थीं उनके विषय में या उनको उनकी सुरक्षा को लेके, सब चीज़ों को लेके हमने अपनी कार्य योजना साल भर की बनाई और धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करी। जो उन्होंने कहा वो हमने 2 साल में ही करके दिखाया। हमारे गाँव में पिछली प्रधानी में ऐसा सब कुछ नष्ट सा हो गया था, कुछ सब जर्जर भवन थे सारे सरकारी। तो हमने एनएम सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अपने ग्राम पंचायत में 8 कमरों का पंचायत भवन, जो कि सपना था, 2 कमरों के पंचायत भवन होते थे। पानी की टंकी, जल जीवन मिशन का वो चल रहा था, तो हम उसको अपने गांव में लेके आए। अपनी एजुकेशन का फ़ायदा गांव तक पहुंचाना था, तो हर घर को नल से जोड़ा। जो हैंडपम्प के लिए या कुएं तक महिलाएं जाती थीं, तो वो सुविधा उनको दी। और अपने यहाँ जलाशय, क्योंकि उनको ऐसा था कि जल संरक्षण पे भी हमें काम करना था, तो आंगनवाड़ी केंद्रों में, पंचायत भवन में, स्कूलों में वाटर हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट और जलाशयों का निर्माण किया। एक नहीं, 3 जलाशयों का उस पे काम किया और जल संरक्षण का काम अपने यहाँ किया। और महिलाओं को आत्मबल और साहस हमसे मिला और आसपास के गांवों में भी ऐसा एक जज्बा जगा, क्योंकि हमारे आसपास के जो अटारी के आसपास 200-300 गांवों में ऐसी कोई महिला नहीं थी कि जो अपनी प्रधानी खुद कर रही थी। और उन प्रधानों के यूनियन के भी अध्यक्ष हम बने और सब मेल, जब हम कोई भी बैठक करते थे प्रधानों की, तो सारे मेल प्रधान आते थे। 33% रिजर्वेशन था पर महिला नहीं आती थी। तो उस बैठक को भी हम ही सब मेल के बीच में एक महिला प्रधान, और उन्होंने हमें अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया, तो ये बड़ी बात थी। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो स्वयं सहायता समूह, अपने गांव में 19 स्वयं सहायता समूह बनाए। उनको पशुपालन से, कृषि के कामों से, जो दुकान करना चाहते थे उनको उस चीज़ों से जोड़ा और उनको स्वावलंबी बनाया। Right. Huge round of applause for all the measures she's implemented as
Sarpanch, and I think she sort of saw it from a women's lens, right? The difficulties they have in terms of even fetching water, and she decided to do something about that. Shamika, you've had a very different arc compared to some of the women we've been speaking to. Has it been easier to break the glass ceiling in the world of economics and high finance? Because you have role models abroad, you have role models in India, from Janet Yellen to Christine Lagarde to Geeta Gopinath. And in India, you've had deputy governors of the RBI, leading bankers. How was your arc, to becoming a member of the Prime Minister's Economic Advisory Council? Well, first of all, I just want to introduce you to, the two ladies you just heard. There is a term we use in research. These are political entrepreneurs. You need these kind of people on the ground to bring about the change which you are envisioning. So, Amrit Kal ka jo aap baar sunte hain, I want to be a little forward-looking, Chandra. This is not going to happen on its own. It's not going to happen from Delhi. If this country has to emerge as a developed country, you need political entrepreneurs on the ground. Now, let me tell you a little bit, tying into my own story. I'm a professor of economics. I do research and I teach. And now I don't get much time to teach, but I do research. When I came back to India in 2004-05, I was doing work in development finance and other kinds of issues. But the more research I did in India, using Indian data, working with Indian institutions, I realized that any aspect of research, eventually gender does emerge. It was not like I went out looking for women's issues. But gender just emerges as a very important part of research and policy making in India. So let me tell you, entire development finance, this whole microfinance revolution that we've had in the last 30 years, or even PMJDY now that the government is part, it's overwhelmingly concentrated on women. Right? That's from the finance side of things. Because when you empower financially women, the household does well. The children's height and weight does better. Girls typically study more. And so there are many societal impacts. So there is a gender component. Jab health dekhna shuru kiya, then you realize that, in some of our best hospitals, most patients, female patients are missing. Meaning women are not coming to hospitals. Now, these are very summary, simple things to look at, but these are very disturbing findings. It's not the cost of healthcare, because we're talking about AIMS, jahan pe 2 million patients come every year. So you have massive amount of data. The minute you start looking at it, you realize, arey, women kahan hai? So you see the concept of missing women, even in terms of seeking healthcare, these begin to emerge. Then we did a research almost 15 years back, which we called a silent revolution. Without a policy push, you are seeing assembly to parliament, constituency after constituency across the country. Women voters are coming out and voting more and more. This silent revolution, you should understand it now. It has transformed the political space of India. And because it has, no political party can ignore women anymore. And I can tell you 10 years back, we would not be saying this. So this is a silent revolution, because when there is a surge of women voters, policies therefore begin to respond to women. I think we saw this play out in UP, right? There was a lot of analysis on... Absolutely. Yeah. In fact, not just UP, right? It is happening in your most developed, richest states. It is happening in the poorest states. It is happening in the remote states. So you are seeing the resurgence of women, and women voters drive a lot of the development agenda in the country, and political parties are responding to that. Right. So I think it was mostly the research, Chandra, and the commitment. When you see something happen, and it is empirically true of the nation, it's a very exciting time to be in India and to be involved in the policy making space. Right. Because next 25 years is transformational for this country. So you want to be part of it. So I made this small leap from full-time academic to now full-time policy. We're glad you did. Political entrepreneurs बताया आपको, क्या आप अपने आप को उस जरिए से देखते हैं कि आप political entrepreneurs हैं? जी बिल्कुल, अपने आप को हम देखते हैं, क्योंकि अपने देश का विकास, राष्ट्र का विकास गांव से ही संभव है. और प्रधानमंत्री जी का भी विजन है कि हर चीज़ गांवों से, क्योंकि अपना एग्रीकल्चर बेस्ड हम लोग कंट्री हैं,
तो गाँव से बहुत कुछ संभव है। हम लोग गाँव को, हमने उनको शौचालय से पहले शौचालय तक नहीं इस्तेमाल करना वहाँ गाँव में होता था, तो वो आवास, शौचालय, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव गाँव, हमें गाँव को शहर नहीं बनाना, गाँव को एक विकसित गाँव बनाना है, समृद्ध गाँव बनाना है। तो उस दिशा में काम करने के लिए एक विजन चाहिए होता है, एक जुनून चाहिए होता है, और कुछ काम करने की उस रूरल इंडिया में ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है जो ज़मीन से जुड़ के काम करें। क्योंकि पॉलिसी मेकिंग अगर हम किसी एसी कमरे में बैठ के करें और वहीं ग्रास रूट लेवल पे जब हम पॉलिसी बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आता है कि योजनाएं बहुत होती हैं, योजनाओं को गांव तक पहुंचाना, उनको अवेयर करना गांव के लोगों को, और उनको फिर इम्प्लीमेंट करना, उनकी सुविधा वो ले सकें जी। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं ग्राउंड पे। बबीता जी। देखिए, अपने कार्यों से साथ साथ हमें पॉलिटिकल का भी चलाना है। पहले औरतें सियासत में नहीं होती थी, मगर सियासत ज़रूरी है, क्योंकि हमसे ज़्यादा सियासत तो आदमी लोग खेल जाते हैं। तो इसलिए सियासत में उतरना तो यही एक मिशन था कि उससे पहले ग्राउंड लेवल वर्कर बन जाऊं। मैं पहले ग्राउंड लेवल वर्कर थी। 2008 में मेरी जर्नी शुरू हुई थी, मैं बीजेपी में थी, तो तब मैं नॉर्मल वर्कर थी। तो 2018 में मैंने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद में मैं सरपंच बनी, सरपंच से ही मैं जिला अध्यक्ष बनी बीजेपी की महिला मोर्चा की, और आज मैं उपाध्यक्ष हूँ स्टेट की, जेके यूटी की महिला मोर्चा की। तो मेरा बस यही है, मतलब मेरा मिशन यही है कि औरतों को जितना हो सके, इन बहनों को, कि सक्षम बन जाएं, सक्षम बन जाएं। क्योंकि हमारी जो विडोज़ हैं, हमारी जो डाइवर्सी औरतें हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ लाचार हैं, कुछ हैंडीकैप्स हैं, उनके लिए जो स्कीमें हैं हमारी सेंटर में, तो बहुत सारी स्कीमें हमारी लॉन्च हो रही हैं, मगर क्या है कि घर घर गांव गांव तक अभी पहुंच नहीं पा रही हैं। इन चीज़ों से काफ़ी चीज़ें अभी दूर हैं। जैसे हैंडीकैप्स हैं, किसी घर में 4-4 बच्चे भी हैंडीकैप्स हैं, जो मैंने खुद देखे हैं। एक बच्चे 2 बच्चे को स्कीम का फ़ायदा देंगे, तीसरे को नहीं देंगे। तो उसके लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, मतलब मिशन के में उतरे हुए हैं कि ये स्कीमों का फ़ायदा जो है कि ऑलमोस्ट सबको मिले। जी। अभी ओल्ड एज पेंशन जो चल रहे थे, वो चल रहा था, अभी बंद हो गया है। उसके लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन हो रही है, मगर अभी तक उनको 4-4, 5-5 महीने का नहीं मिला है। ऐसे कई स्कीमें हैं जो कि बंद हो चुकी हैं, हो रही हैं आस्ते आस्ते से बंद। मगर चलिए, अब हमारा नारा, मोदी जी का नारा, मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसे ही मेरी जर्नी जो शुरू हुई है, मेरे हस्बैंड से हुई है। मेरे हस्बैंड बीएसएफ में जॉब करते थे, इन्होंने छत्तीसगढ़ में ड्यूटी की, उसके बाद में ये कश्मीर में आए, कश्मीर में 4 साल ड्यूटी की इन्होंने। तो उसी दौरान मैं सरपंच बन गई, तो इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके मेरा साथ दिया, मुझे आगे बढ़ाया। ये गलत है, मतलब होता है, गलत भी नहीं है, होता है। नहीं, सुनने में बहुत हर अच्छा है। औरत के पीछे आदमी का हाथ रहे तो औरत काफ़ी आगे बढ़ेगी। इसलिए मैं कहती हूँ, मोदी है तो मुमकिन है, हाँ, संजय है तो मुमकिन है, क्योंकि बबीता तभी आगे बढ़ी। संजय कहाँ है वो? जी, उनके लिए भी तालियां बजनी चाहिए। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल। Pranjal ji, I want to understand from you, how did this affect the way you look at policies within your district? Being a woman, how did it influence you, first in Thiruvananthapuram and as district magistrate, now in terms of your priority areas and focus areas? Yeah, I think getting to work at the district level, like the most local level in terms of administrative, from administrative perspective, it's a very great opportunity. It's in fact a learning opportunity, and it's very great because the efforts you put, you directly get to see the result. Sometimes we make policy and it takes time to
get implemented, and then it takes even further time to see how it has impacted the intended section of the society. So at the district level, it has been my very special focus that uh, you know how, like, of course now literacy level of our country has really gone high, and it's a very good development. But at the same time, we know that vocational competency, like young girls don't get as much as opportunities, to develop themselves vocationally as their brothers or their classmates, male classmates must be getting. So I in my district there are a few institutes, they are vocational institutes. So I just focused on like how they will get more confidence to give interview, to learn English, to learn basic computers, and how to talk in front of many people. And I'm very happy to share with all of you that their own teachers told me that their girls have done really wonderful in interviews, and they have got more placement than ever Wow, before. huge round of applause for that. Yeah. So, and even in other sections, so I have observed one thing that though now children are going to school, and that's a wonderful thing, but co-curricular activities, and like an opportunity to learn like various forms of art is not available to all. Like it's still confined, learning dance, learning music, learning craft is still confined to a particular section of our society, which has, money and other resources. So we Right. started in my district something called Kala Shakti, my art, my empowerment. And through that, we are teaching dance to girls, and they are learning Odissi dance. And 2 months back, in the month of May, girls of my district, they performed on the stage along with national awardee winner dancers. Wow. And yes, and these accomplished dancers actually remark that these girls are not at all like first time, beginners. They are like already so smart, and their presence of mind is so good. So, and then also we are working on drugs. We are Right. trying to have we are promoting sports so that our children develop team spirit, and they develop some purpose, some physical stamina, and they stay away from drugs. And in this way, there are many such initiatives we are able to take, and we can see direct results. So that's immense satisfaction to me and my team. Thank you. Right. Huge round of applause for that. In fact, I wish this is a discussion that we can stretch for some more time, because we're hearing so many brilliant examples of how governance, women at the helm of governance policy making, can play a huge role. Thank you very much, all of you, Shamika Ravi ma'am, Sanyogita ji, Babita ji, and Pranjal ji, for sharing your experiences with us. And I hope this will spur more women in the area of governance and policy making. That's certainly the need of the hour. Thank you very much.